Both the topics of today are related to the lead, and I will try to cover both of them today. So the first topic is the Chalazion. ગુજરાતીમાં આપણે જેને આંજણી કહીએ અથવા हिंदी में हम बोलते हैं उसे गिल्टी या आँख की पलकों में एक गिल्टी हो जाना એટલે કે પાપણમાં એક આંજણી થઈ જવી. The English name is Chalazion for the same. And let's see the anatomy first, where it happens. The chalazion is a swelling which occurs in this tarsal plate in which there are tarsal glands. In the first session, we have seen the anatomy of the eyelid, in which I have shown you. This is the tarsal plate and tarsal gland. And this tarsal gland produces mebum for the eye in the lubrication, and through this opening, it's come out on the lid margin. This opening is situated just behind the eyelashes or the cilia on the lid margin. So let's see on the next slide how these tarsal plate are situated. If I remove everything from the orbit except this lid structure which are given support by this tissue, then there are superior tarsal plate and the inferior tarsal plate which are situated into the posterior half of the lid layers, and it gives structural support to the lid, as well as there are meibomian glands situated inside this gland. So this is a superior tarsal plate which is in the upper eyelid, and this is the inferior tarsal plate which is in the lower eyelid. The number of glands in the upper eyelids are more compared to the lower one. So this is the same figure which suggests the vertical cross section of the upper eyelid, and there is a meibomian gland inside the tarsal plate. So how the meibomian gland will look like? If you invert the lid, then this is an infrared photograph of the everted lid. So behind the lid, the conjunctiva is a transparent structure. So through infrared camera, you can able to observe on the photograph the number of meibomian glands are situated in the tarsal plate. You can see the configuration also. This is another photograph in which there are multiple patterns of the meibomian glands are visible. Some are shorter or underdeveloped, some are fully well developed, and some are irregularly developed. So what these meibomian glands do? This meibomian gland produces mebum, which is important for the lubrication in the eye, and it's a part of a tear film. So it gives optical clarity to the eye. So you can see these are the cilia which are situated on the eyelid, and just behind the cilia you can see some oil droplets which are produced on the lid margin. So these are the oil droplets which are produced on the lid margin, and if you look carefully, there are opening of the meibomian glands just behind these oil droplets. If you can see carefully, you will able to mark it. So these are the meibomian gland orifices which produces meibomian gland and send it onto the lid margin. So this produces the lipid layer of the tear film, which prevents evaporation of the aqueous layer, and it maintains the integrity of the aqueous layer on the eye or the cornea. So what happens if the quality of this mebum gets altered? Instead of oil droplet, it becomes like a dalda ghee. It becomes thicker, more viscous, and it will not come out easily out of the gland. You have to squeeze sometimes the meibomian gland. I will share one video of YouTube which will show you the how meibomian glands becomes thicker and can be extracted from these openings. This is another figure in which the mebum quality is altered, and the reason to alter this is the raw material which is present inside our body is lacking certain substances like omega-3 fatty acids, which are useful to maintain its oil-like quality.
So one more important thing is Kajal application. Kajal application is also not advisable because when you apply this on the lid margin at the same place where the meibomian glands have their opening, we are clogging the opening of the gland, and thus the production which is continuously going on inside the meibomian gland gets accumulated inside the gland only or the lead only. तो क्या होता है कि जब मीबोमियन ग्लैंड प्रोडक्शन जो कर रहा है ऑयल, उसको हम कहते हैं मीबम, अगर वो बाहर नहीं आ पाता है तो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है. मेरा ये ओरिएंटेशन रहेगा कि एवरीबडी गेट आइडिया अबाउट दिस एंटिटी, क्योंकि ये हमें करीब करीब ऑलमोस्ट हर 10 घर में से एक घर में पाया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट अगर शुरू से ही कर दिया जाए तो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट. सो आई विल बी मोर ओरिएंटेड ओवर द क्लिनिकल साइड. थियरी पार्ट आप किताब में अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन आवर नेक्स्ट सेशन. लेकिन क्लिनिकली आपको क्या देखना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. So chalazion is a painless accumulation of meibum inside the tarsal plate, which is usually roundish form lesion. There is no tenderness and size may vary from 2 millimeter to 20 millimeter. And what are the causes of chalazion? Usually frequent rubbing and touching of eyes with dirty hands will produce this kind of chalazion, because by touching you are blocking the meibomian gland openings with dust particles or something which is stuck to your hands. Another cause is using and sharing eyeliners. So we do not advise use of kajal or eyeliners in case of chalazion which occurs frequently. You may apply occasionally once in a while in a some occasion you are attending. The third common reason of chalazion is refractive error. If refractive error is not corrected, especially the astigmatism, then chances of recurrent chalazion are high. So if somebody has recurrent chalazion, we have to check their eye power, whether he has or she has any refractive error present or not. The fourth reason is diabetes mellitus, especially in case of more than 40 years of age and there is recurrent chalazion which are infected also sometimes, then we suspect the high sugar level. क्योंकि जब शुगर लेवल हाई हो जाता है तो बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश होते हैं, तो उसकी वजह से डायबिटिक के पेशेंट में. और द लास्ट रीज़न इज ऑल्सो फाउंड समटाइम इन डायबिटिक पेशेंट, हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड इनटेक. जैसे कि डालडा घी का उपयोग ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल मिलता है eyelids को, the material is not good for the production of the quality meibum. So the meibum which is produced is just like a dalda ghee. So diabetes and cholesterol level, sugar level and the cholesterol level are important in case of recurrent chalazion in the patient having age more than 40 years. Now, what will you do if it gets infected? When it gets infected, it forms abscess in the eye and we called it internal hordeolum. This is one of the painful condition of the eye, which can be ruptured on either skin side or the conjunctival side. If the abscesses get larger and larger, somewhere it has to be released either on the conjunctival side or on the skin side. So we sometimes rupture them intentionally also from certain thinned out points, and this is the indication to start local antibiotic and analgesic in forms of drops and ointment, and sometimes it may need oral antibiotic also, especially in diabetics patient. This can be associated with a pyogenic granuloma. Now what is pyogenic granuloma? If you invert the lid, you may see a polypoidal mass on the conjunctival side,
which is a sort of granulomatous type of infection, and this requires sometimes a long term use of antibiotics, and if it will not clear, we sometimes give steroids also in short course for the recovery of the inflammatory part of the polypoidal mass. So that can be associated with pyogenic granuloma. So now how will you treat the patient? ये सबसे जरूरी है आपको समझ लेना, क्योंकि डे इन एंड डे आउट आपके घर के आजू बाजू किसी न किसी को आप देखेंगे तो ये फॉर्म हो रहा हो। अगर उस बंदे को पेन नहीं है, इफ देयर इज नो पेन और इन्फ्लामेशन, नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन, नो कंजंक्टिवल कंजेशन, जस्ट गिव हॉट कंप्रेशन। अभी हॉट कंप्रेशन देने से क्या होगा कि आंख के अंदर, जैसे मैंने बोला है कि एक मीबम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डालडा घी जैसा है। तो घर पे जब हम विंटर में हमारे घर के डिब्बे में डालडा घी जब जम जाता है, इट गेट्स स्टिफ, देन व्हाट वी डू कि हम उसको थोड़ा डिब्बे को गर्म करते हैं। तो हमेशा उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, तो डिब्बे को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो डालडा घी पिघल जाएगा और निकल आएगा। तो इसी तरह हमें आँख के लिए भी थोड़ा सा गर्म पानी का सेक करना है। तो कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू द हॉट कंप्रेशन? यू हैव टू टेक अ बकेट ऑफ वाटर और warm water, slightly hot, not very boiled water you require for this। तो थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसमें एक नैपकिन थोड़ा सा मोटा सा गीला कर देना है और निचोड़ देना है, और निचोड़ के वो नैपकिन आंख बंद करके आंख के ऊपर लगाना है। और एक बार गर्म पानी में वो भिगो के निचोड़ के आंख पे लगाएंगे तो वो 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो वापस उसको गर्म करके वापस लगाना है। ऐसा 10 मिनट के लिए करना होगा, और 10 मिनट करने के लिए वो आपको 10 बार गीला करके निचोड़ के आंख के ऊपर बंद आंखों पे लगाना है, जिससे कि आंख के अंदर थोड़ी हीट पेनिट्रेट हो और जो डालडा घी जैसा मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, द मीबम, वो धीरे धीरे पिघल के बाहर निकलने लगेगा। तो गर्म पानी का सेक इतना करना है कि जिससे आँख की स्किन जो होती है वो जल नहीं जाए। तो यू हैव टू टेक स्लाइटली वार्म वाटर, नॉट वेरी हॉट वाटर। और दिन में 2 बार आप 10-10 मिनट कर सकते हैं। एक बार से भी काम चल जाता है, लेकिन इफ somebody wants to do, you can advise 2 times also। और ज़्यादातर हम दिन में 2 बार एडवाइस करते हैं, क्योंकि पेशेंट को टाइम नहीं होता है, बिकॉज दिस इज अ क्रोनिक कंडीशन एंड नॉट मच पेनफुल। और कितने समय तक करना होगा? जैसे दिन में 1-2 बार गर्म पानी का सेक करते हैं, तो 1 महीना करना होगा कि 15 दिन करना होगा कि 2 महीना? तो मेरा ये मानना है कि जितने दिन से ये कैलेजियन है, समझिए कि किसी को 3 महीने से है, तो 3 महीना ठीक होने में लग सकता है। कोई भी क्रोनिक कंडीशन आप ले लीजिए, जितने साल से वो, जितने महीने से वो, या जितने ड्यूरेशन से वो एग्जिस्टिंग है, उतना ड्यूरेशन उसको ठीक होने में भी लग सकता है या उससे ज़्यादा, क्योंकि रीमॉडलिंग टेक्स मोर टाइम। सो आप 1 महीना एडवाइस कीजिए, फिर देखिए। अभी ये तो बात हुई कि जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन नहीं है तब ये ट्रीटमेंट देनी है। तो मैं ज़्यादातर पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि 5 दिन आप गर्म पानी का सेक करो, और उससे अगर आपको अच्छा लगता है तो महीना भर कंटिन्यू करो, एंड देन वी विल सी अगेन आफ्टर अ मंथ। लेकिन अगर देयर आर साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, then you have to go for plan B। Treatment plan B is for if there is pain, tenderness, conjunctival congestion, like signs of infection and inflammation is there, then we have to give topical antibiotic drops and ointment। Systemic antibiotics depends on inflammation and status of blood sugar। मतलब खाने की एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, ये आपको कितना सीवियर इन्फेक्शन है उस पे, और पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं, उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। Oral analgesic may be needed to reduce the pain and inflammation, and hot compression should be started after signs of inflammation subside। मतलब कि जब भी आप किसी को पेन टेंडरनेस के साथ देख रहे हो, तो इमीडिएटली आपको हॉट कंप्रेशन नहीं देना है, क्योंकि
हॉट कंप्रेशन देने से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो पेन बढ़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 से 7 दिन ओरल एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक देके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों चीज़ एक बार कम हो जाए और टेंडरनेस चली जाए, पेन चला जाए, उसके बाद हम 7 दिन बाद हॉट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, which may last for 1 or 2 or 3 months also. So this is treatment plan B for the Chalazion. Now, what is the treatment plan C? When you have to intervene, you at certain stage क्या होता है कि 6 महीना साल भर से है बंदा गर्म पानी का सेक भी ठीक से कर नहीं रहा है और ना ही ट्रीटमेंट अच्छे से करता है, and he or she wants to get rid of this swelling on the eyelid. तो ये क्या करता है, जब स्वेलिंग बहुत बढ़ जाता है तो ये थोड़ा सा एस्टिग्मेटिज्म यूज करता है बाय प्रोड्यूसिंग प्रेशर ऑन द कॉर्निया। मतलब कॉर्निया के एक एंड पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो कॉर्निया का शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा और उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस होगा। So that will deteriorate the quality of vision also. So if a patient wants to get rid of this, then we have two options which we give depending upon the size of the chalazion. If the size is small, painless, non-infected, and about 2 to 5 millimeter in size, then we give intralesional steroid injection, triamcinolone, and this can be repeated for 2 to 3 times on monthly basis after checking how is the response on the patient side. तो यूजुअली 2 से 5 मिलीमीटर का जो कैलेजियन होता है वो ज़्यादा तकलीफ भी नहीं करता है और गर्म पानी से ठीक भी हो जाता है, लेकिन लोग ट्रीटमेंट अच्छे से करते नहीं है और उसकी वजह से हमें फिर ये स्टेप लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्वेलिंग बहुत बढ़ जाता है, इफ इट इज लार्जर देन 5 मिलीमीटर इन साइज, विच इज अ पेनलेस नॉन टेंडर, एंड ट्रीटमेंट करने के 1-2 महीने 3 महीने बाद भी अगर वो सबसाइड नहीं होता है और there is no sign of active infection and inflammation, then we go for a surgical treatment. What are the surgical treatment? Either we go for IND of chalazion or we can do complete excision of the chalazion. So in this figure you can see the chalazion on the left eye in the left figure, and after the treatment of IND of chalazion you can see on the right eye figure that it is completely subsided. It will not subside immediately after doing IND, क्योंकि जो swelling होता है उसमें से हम मिबम तो निकाल देते हैं, लेकिन वो मिबम निकलने के बाद जो लीड का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया है उसको रीमॉडलिंग में करीब 1 महीना जैसा टाइम लगता है। तो इट विल ग्रेजुअली subsides and takes its normal anatomy. So that is all about Chalazion. We will take one more topic today, and that is Stye. Stye is also the similar lesion, so I have clubbed it together. Let's see the lead anatomy first, where the Stye occurs. So this is the anatomy of the eyelid, in which you can see the yellow part behind, which is a meibomian gland and tarsal plate, which we have talked in our Chalazion topic just now. And this is Chalazion occurs in the posterior lamella of the eyelid, while in anterior lamella there are certain other structures, especially you can see this is a cilium. The cilium is an eyelashes on the lid margin, and with that you can see there is a hair follicle of the eyelash which is associated with the gland of Zeiss. These glands of Zeiss are a modified sebaceous gland, and these produce some sort of sebum, and there is one more gland which is called gland of Mole, which is
modified sweat gland on the lid margin. So these are situated anterior to the gray line on the lid margin. This gray line is very important structure for the surgical purpose on the eyelid. So what is Stye is? Stye is an infection of the gland of Zeiss, which is a modified sebaceous gland. So you can see at the root of the eyelashes, you can see a small pus point like a abscess, which is also known as external hordeolum. External hordeolum is Stye. While when chalazion is infected, we call it internal hordeolum because it occurs in the posterior lamella. We call it internal hordeolum. While this occurs in the anterior lamella, we call it external hordeolum. So what is Stye? It's a tender inflamed swelling on the lid margin just at the root of the eyelashes, which is an inflammation of gland of Zeiss, and it is usually infective in nature. And gland of Zeiss are modified sebaceous gland associated with the eyelash follicle. So what are the symptoms and signs? Usually pain, swelling, redness, discharge, stickiness. So these are the common symptoms from the patient side, or you have to look for signs like erythema at the lid margin at the base of the eyelash. There should be a pus point which may be visible at the eyelash root. There can be associated conjunctivitis also depending upon the hygiene of the patient. And there can be crusting at lid margin suggestive of blepharitis. It means that the infection is not localized to just one single gland. It is affecting many more glands in a row on the lid margin. So what are the causes? Again, frequently touching eyes and surroundings, refractive error, and the poor hygiene. These are the three common causes of Stye. Diabetic is another important cause of Stye. It may sometimes spread over the adjacent structure of the eyelids and it may cause a preseptal cellulitis. हमने सबसे पहले एनाटॉमी के लेक्चर में आपको एक ऑर्बिटल सेप्टम दिखाया था. ऑर्बिटल सेप्टम एक ऐसी चीज है जिससे कि इन्फेक्शन ऑर्बिट में स्प्रेड होना रिस्ट्रिक्ट होता है. तो the infection cannot penetrate orbital septum, so the infection gets spread over the other structures of the eyelids and the adjacent area. So it will cause a preseptal cellulitis, और preseptal cellulitis जब होता है तब oral antibiotic देना जरूरी हो जाता है to cover the infection and the inflammation. So we will give both oral analgesics also and antibiotics also. और अगर इन्फेक्शन इतना सीवियर है कि वो ऑर्बिटल सेप्टम क्रॉस करके ऑर्बिट के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, then we call it a orbital cellulitis or post septal cellulitis. So orbital cellulitis is a very severe condition and we need to admit the patient in the hospital and we have to give the IV antibiotics to control the infection part. और पोस्ट सेप्टल सेल्यूलाइटिस में हमारे आईबॉल के मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि आईबॉल मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है. तो दैट इज वन ऑफ द वेरी सीवियर कंडीशन and usually commonly associated in with high sugar level, that is in diabetic patient. Now more and more patients with diabetes are increasing with sedentary lifestyle and laziness. So we are not active in part on our lifestyle with good food habits and exercises. So incidence and prevalence of diabetes is increasing over a period of time. तो इन्फेक्शन को स्पेशली आई इन्फेक्शन को कभी भी लाइटली नहीं लेना है. यू हैव टू ट्रीट इट प्रॉपरली, एल्स इफ यू कैन नॉट ट्रीट, रेफर इट टू द आई स्पेशलिस्ट सो दे कैन ट्रीट इट इन अ बेटर वे. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? एपाइलेशन ऑफ आईलैशेस एसोसिएटेड, मतलब कि जो आईलैश के रूट में आपको एब्सेस दिख रहा है वो आईलैश आपको निकाल देना है. यू हैव टू प्लक इट आउट. The medical term for plucking the eyelash is called epilation. Topical antibiotic eye drops and ointment is given.
Lid hygiene is very much important. Some may use a boric acid powder diluted in a water and then apply it on the lid margin, but that at all is not much necessary if you put antibiotic eye drops regularly. गर्म पानी का सेक का इतना रोल नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गर्म पानी के सेक से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है. So it's controversial whether to use hot compression in sty or not, but some may advise because it increases the supply of antibody and certain blood substances which are important for the healing. Correction of refractive error is important, and you have to rule out diabetes if the age is more than 40 years. So pain, however little, will not make you comfortable. So ये patient आपको especially आँख के पास है तो तुरंत ही आपके पास आएगा. So that is all about the two important commonly occurring entity, that is Chalazion and the Stye.